Let's read the lesson. Chapter 11, Forms of Water. Learning points: forms of water, liquid, solid and gaseous. Water cycle. Two topics we have to study in this lesson: forms of water and next topic is water cycle. Let's learn. Let's understand the different forms of water. What are the different forms of water are there? Liquid, solid and gases. Let's learn one by one. First, by this activity we are going to learn about the forms of water. Activity 1, liquid form of water. Take a ice cube in a clean saucer. Keep the saucer in the open. After some time, what do you get? Observe it, taste it. What is it? The ice cube turns into water. You can see in the picture, this is a saucer and one ice cube is put inside, and when we put it in open side, it melts and become a water. So you have to do this activity at your home and understood at home that what is a liquid form of water. How we get? By the ice cube. When ice cube melts, it turns into water, and this water is the liquid form of water. Now next, ice melts into water in warm conditions. We know that अभी हम गर्मी के टाइम होगा तो हम आइस उसको बाहर रखेंगे, फ्रिज में से बाहर निकल कर रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हाई टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। मीन्स वार्म कंडीशन में वो मेल्ट हो जाता है। एक्टिविटी 2, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। अब दूसरी एक्टिविटी से हम नेक्स्ट उसका फॉर्म, वाटर का फॉर्म अंडरस्टूड करेंगे। फर्स्ट, टेक सम वाटर इन द ट्रे ऑफ अ रेफ्रिजरेटर. यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज अ ट्रे and we fill it with water and keep it in the freezer. Ask your mother to keep it in the freezer. Take help of your mother and put it in the freezer. Ask her to take out the tray after an hour. 1 घंटे के बाद मम्मी को बोलो कि उसको बाहर निकाले. What do you get? आपको क्या मिलेगा? What turns into ice? वाटर टर्न्स इंटू आइस. क्या हो जाएगा? वाटर टर्न्स हो जाएगा और वो क्या बन जाएगा? आइस. जो हमने तो पानी रखा था फ्रीज़र में, वो फ्रीज होकर क्या बन जाएगा? आइस. ये आइस जो है वो क्या हुआ है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है. इस पे से हम समझ गए कि व्हेन कूल्ड वाटर फ्रीजेस एंड बिकम्स आइस. जब हम पानी को ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वो आइस बन जाता है. एंड आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. नाउ एक्टिविटी 3, गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर. टेक सम वाटर इन अ किटली. हीट इट ऑन अ गैस स्टोव. जैसे कि पिक्चर में दिखाया है, आपको ऐसी किटली लेनी है, उसमें थोड़ा सा पानी लेना है और उसको हीट करना है. What do you find out after some time? थोड़े टाइम के बाद आप क्या देखेंगे? Steams come out from the kettle. This kettle is there and steam is come out after some times, after some heating. इसका मतलब है when water is heated, it turns into steam. इसका मतलब है कि जब भी हम पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? टर्न होकर स्टीम में. स्टीम मीन्स भाप, भाप बन जाता है. नेक्स्ट, now hold a cool steel tumbler in front of the kettle as shown in the picture. जैसे ये पिक्चर है वैसे ही ये जो स्टीम बाहर निकल रही है तो उसके आगे हमें एक कूल मीन्स ठंडा स्टील का टम्बलर लेना है. आप ग्लास भी ले सकते हैं जो ठंडा होगा. और What do you see? तो आप क्या देखेंगे? Some droplets of water are seen on the tumbler. You can see थोड़े थोड़े पानी की बूंदें हम वो स्टील के टम्बलर पर देख सकते हैं, उसकी सरफेस पर देख सकते हैं. How did this happen? ये कैसे हुआ? हमने तो पानी उसमें रखा ही नहीं था, पहले से पानी था ही नहीं, तो फिर ये स्टीम का वाटर बना. क्या हुआ? Let's understand. Steam turned into water on touching the cool surface of the tumbler.
जो ये भाप बन रही है वो कूल सरफेस के टच में आएगी तो वो क्या बन जाएगी, फिर से वाटर की बूंदें बन जाएगी, मीन्स पानी की बूंदें बन जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं उसे। When steam is cooled, it turns into water। इसका मतलब है स्टीम को हम अभी ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। नेक्स्ट, thus water, ice and steam are different forms of water। इसका मतलब है वाटर, आइस एंड स्टीम ये 3 डिफरेंट फॉर्म है पानी की। वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, steam is the gaseous form of water। Now next topic, water cycle। Water from lakes, rivers and seas keeps on changing into water vapor। This is called evaporation। जो लेक्स, रिवर्स और सी का पानी है वो सन की हीट से चेंज हो जाता है, चेंज होकर क्या बनता है, भाप बनती है, ऐसे वाटर वेपर बनती है। वो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। When the sun shines brightly, the evaporation is rapid। रैपिड मीन्स बहुत ही फास्ट होता है, कंटिन्यूस होता है। जब सनशाइन ब्राइटली हो गया तब। नेक्स्ट, द वाटर वेपर राइजेस अप एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। जो ये वाटर वेपर बनी हुई है वो राइजेस अप होगी, मीन्स आगे आगे बढ़ेगी, ये आगे आगे बढ़ेगी और क्या होगा, एंड फॉर्म्स क्लाउड्स, और क्या बन जाएगी, क्लाउड्स बन जाएगी। व्हेन द क्लाउड्स कूल, वो ये जो क्लाउड्स है वो ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे। द वाटर वेपर चेंजेस बैक, जो ये वाटर वेपर है वो चेंज होकर बैक इनटू वाटर, वो बैक वाटर में बन जाएगी। एंड बिकम्स डाउन ऑन द अर्थ एज रेन, और अर्थ पर फिर से आ जाएगी पानी की, बारिश की बूंदों के रूप में। सम ऑफ द रिवर फ्लोज ऑन लैंड, थोड़ा सा जो रेन वाटर होगा वो क्या होगा, लैंड पर फ्लो होगा। इट फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स, वो स्ट्रीम भी बन जाएगा। रिवर्स एंड फाइनली, रिवर भी बनेगा, उसके बाद फाइनली इनटू सी, और फिर सी में बदल जाएगा। सम रेन वाटर कलेक्ट्स इनटू पॉन्ड्स, lakes and tanks। Again, the water from the different sources evaporates and the process continues। This is called the water cycle। Now I know first, water exists in 3 forms: solid, liquid and gaseous। Second, ice melts into water in warm conditions। On heating, water changes into steam। Number 3, on cooling, steam changes into water। On further cooling, water freezes into ice। Number 4, water from lakes, rivers and seas keeps on changing into water vapor। Water vapor rises up and forms clouds। On cooling, the water vapor in the clouds changes into water and falls down on the earth as rain। The rainwater collects in ponds and lakes। It flows into streams and rivers। The river water flows into sea। This is called the water cycle। Now time for summative assessment। Let's answer question 1। Choose the correct word from the box and fill in the blanks। Number 1, ice is the solid form of water। Solid form of water is ice, I-C-E, ice। Ice is the solid form of water। Second, number 2, when water is heated, it turns into steam, S-T-E-A-M। Water is heated, turns into steam, S-T-E-M, steam। Next, 3 number, the process of changing of water into water vapor is called evaporation।
evaporation. Evaporation. Number 4. Water vapor rises high up and forms clouds. 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 Water vapor rises high up and forms clouds. Question number 2. Answer the following in one word. Number 1. Which form of water is not visible? Answer is gaseous. 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 Number 2. What does the water vapor change into when it comes in contact with a cool surface? Answer is water droplets. Droplets. Water droplets. Number 3. Which form of water is contained in the air? Answer is gaseous. 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 Question number 3. Tick the correct word printed in bold. Number 1. Water that we drink is solid or liquid? It is liquid. So make a tick mark on a liquid. Number 2. We get rains in monsoon or winter? Rain we get in monsoon. Number 3. The ice is made in refrigerator or on stove? Ice is made in refrigerator. Number 4. Steam comes out of food which is hot or cold? Steam is come out of food which is hot. Answer is hot. Question number 4. Complete the following sentences. Number 1. Ice is the solid form of water. Ice is the solid form of water. Number 2. Water occurs in liquid form. Water occurs in liquid form. Number 3. Steam is the gaseous form of water. Steam is the gaseous, gaseous form of water. Question number 5. Match the columns. Column A, column B. Number 1. Water vapor into water. Number 2. Water into water vapor. Number 3. Ice into water. Number 4. Water into ice. Column B. A. Freezing. B. Melting. C. Condensation. D. Evaporation. Now match it. Water vapor into water means condensation. Number 2. Water into water vapor means evaporation. D. Number 3. Ice into water is B. Melting. Number 4. Water into ice is A. Freezing. Now next. Question number 6. What is evaporation? On heating, water changes into water vapor. This is called evaporation. जब हम पानी को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वह वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. इसे बोलते हैं evaporation. और in another sentences, water from lakes, rivers and sea keeps on changing into water vapor. This is called evaporation. Formative assessment. Let's have fun. Color this picture. Next, let's do activities. Take water in a glass tumbler. Mark it level with sketch pen. Place it in the sun. Daily mark the water level. What do you observe? इसका मतलब है आपको एक कांच का टबलर और ग्लास लेना है और उसके अंदर पानी भरना है और स्केच पेन से उस पर लाइन बना देनी है वाटर के लेवल के लिए और उसे सन के हीट के आगे रख देना है बाहर खुले में और डेली देखते रहना है कौन सा लेवल आया है वाटर का. वो लेवल पर आप मार्क करते रहना और ऑब्जर्व करना कि क्या होता है. ओके, दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू. Do it at your home. Let's do the exercise energy and water chapter 11 forms of water. First question, fill in the blank
water into water vapor is called evaporation. R-A-T-I-O-N. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Evaporation. Number 4. Water vapor rises higher and forms clouds. C-L-O-U-D-S. Water vapor rises higher and forms clouds. Question number 2. Answer the following in one word. Number 1. Which form of water is not visible? Answer is gaseous. G-A-S-E-O-U-S. Gaseous. Again we read. Which form of water is not visible? जो दिखाई नहीं देता है, not visible. Answer is gaseous. G-A-S-E-O-U-S. Gaseous form is not visible of water. What does the water vapor change into when it comes in contact with a cool surface? Answer is water droplets. D-R-O-P-L-E-T-S. Water droplets. What does the water vapor change into when it comes in contact with a cool surface? Answer is water droplets. Number 3. Which form of water is contained in the air? Answer is gaseous. G-A-S-E-O-U-S. Gaseous form of water is contained in the air. Now next question number 3. Pick the correct word. Number 1. Water that we drink is solid or liquid? Here drink word is given, so we can read drink liquid. Water that we drink is liquid. Number 2. We get rains in monsoon or winter. Rain is there, so we get rain in monsoon. Number 3. The ice is made in refrigerator or on stove. Ice is made in refrigerator. Steam comes out of food which is hot or cold. Steam is come out from the food which is hot. Question number 4. Complete the following sentences. Number 1. Ice is the solid, S-O-L-I-D, solid form of water. Ice is the solid form of water. Number 2. Water occurs in liquid form. L-I-Q-U-I-D. Water occurs in liquid form. L-I-Q-U-I-D, liquid form. Number 3. Steam is the gaseous. G-A-S-E-O-U-S. Steam is the gaseous form of water. Now question number 5. Match the columns. Water vapor into water. Answer is condensation. Water into water vapor. Answer is evaporation. Ice into water. Answer is melting. Water into ice. Answer is freezing. Now question number 6. What is evaporation? Answer. On heating water changes into
called evaporation. Again we read on heating, water changes into water vapor. This is called evaporation. Or other answer is in summer or other answer is water from lakes, rivers and seas keeps on changing. KEEPS keeps on changing into water vapor. This is